morning, students. How are you all? Hope you have seen the video of yesterday. It was on punctuation, and through pictures and video, your doubts are cleared. What is punctuation? And you have read in your earlier classes also. It is in just advanced of that topic. Now, today's video is on sentences. Now, it is chapter 19. What are sentences? What type of sentences you have? Okay, so we are reading about the types of sentences. First of all, I want to speak about what is a sentence. A sentence is a group of words that makes a complete sense. I am going. It is clear. It is a small sentence, but meaning is clear. Go, is, are, where, you. So it is not meaningful. So it is not a sentence. These are words. Are, be, going. So it is not giving you complete sense. So sentence is the arrangement of words which give you a complete sense. Okay. Or sentence, it starts from capital letter and ends with full stop. It was a sunny day. Okay. It ka I capital and after day you have to put full stop. If it is in question way, then you have to put question mark. It is a type of punctuation. It comes in punctuation also. Will you come tomorrow? So question mark. A sentence that expresses a command, a request, or some advice. It is called an imperative sentence. It ends with a full stop. It is a simple sentence. First type is imperative. It is a simple sentence which ends with full stop. Like, go with him now. It is a command. Somebody is giving you command. Request, please open the door. ठीक है? Request हो गया, command हो गया, advice. If you do like this, you will get success. So you are giving you advice. These are simple sentences, but three things if you see, then it is an imperative sentence. Exclamatory, I already told you in punctuation, where a sudden expression is shown. That was a narrow escape. है ना, आप बहुत मुश्किल से बचा, आप एकदम expressions दे रहे sudden. So that is exclamation. Simple sentence, but ends with expression. Exclamatory mark. So here on page number 83, 7-8 sentences are given. So you have to read the sentences and tell its type, which type of it is. We have read about 3 types of sentence: imperative, exclamatory and question mark. Question mark वालों को हम interrogative बोलते हैं. ठीक है? Interrogative question वाली sentence, imperative simple and exclamatory sudden expression. Okay? Imperative में command, request और advice कुछ भी हो सकता है. So first, please allow me to participate in the function. ठीक है? So please लगा है, request है, imperative. You should not talk to stranger. ये आपको request है, imperative. She has won the spelling quiz. This is simple, so declarative. जहाँ simple sentence होगा, we can say declarative sentence. How are you? Interrogative. How big the house is? Expression है, आपको देख के उसको expression आया. Exclamatory. I will not come to school tomorrow. Declarative, simple sentence. Have you applied for the talent test? Interrogative, question is asking. Go and fetch my bat. It is command, so imperative. ठीक है? Read the following sentences about a watch. This you can leave, it is not important. So question B, you can leave it. Now come to question number C. Now in this, as I told you, sentence is a group of words that are arranged in a proper way. Now subject has 2 parts. Sentence has 2 parts. Subject and predicate. Subject जिसके बारे में बात हो रही है और predicate मीन्स जिसके बारे में क्या कहा जा रहा है. ठीक है? डेली फर्स्ट सेंटेंस देखिए. द लिटिल गर्ल हैज़ मेनी टॉयज. किसकी बात हो रही है? द लिटिल गर्ल. तो ये हो गया सब्जेक्ट. और क्या कहा उसके बारे में?
हैज़ मेनी टॉयज, तो वो वाला पार्ट हो गया प्रेडिकेट. इन दिस वे वी हैव टू सेपरेट द सेंटेंसेस इन क्वेश्चन नंबर सी इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट को आपको सर्कल करना है और प्रेडिकेट को अंडरलाइन करना है. सो आई एम गोइंग टू रीड द सेंटेंसेस. Delhi is hot in the month of June. Here subject is Delhi, to circle the Delhi and remaining part is predicate. Second, lilies are beautiful flowers. किसकी बात हो रही है? Lilies की. तो lilies हो गया subject and rest part is predicate. Now third, Akhil and Rohit study in the same school. So यहाँ पर किसकी बात हो रही है? अखिल एंड रोहित. तो दे आर सब्जेक्ट. अखिल एंड रोहित तक का सेंटेंस सब्जेक्ट हो गया. रेस्ट इज प्रेडिकेट. तरुण इज थीन एंड टॉल. ठीक है, तरुण इज सब्जेक्ट एंड रेस्ट पार्ट इज प्रेडिकेट. ही लुक्स हैंडसम. ही इज सब्जेक्ट एंड रिमेनिंग इज प्रेडिकेट. चार्ल्स डिकन्स इज अ ग्रेट राइटर. सो इट इज चार्ल्स डिकन इज subject and rest is predicate. I have told you 5 sentences. Remaining 5 you can do on your own through pics. Okay. Now question number D. Fill in the blanks by adding the missing subject or predicate. I have framed sentences. It is optional. You can frame your own sentences after seeing my sentences. Okay. In some sentences subject is given, predicate you have to write. In some sentences predicate is given, subject you have to write. It is voluntary, not compulsory. जो मैंने बोला है वो ही होगा. आप अपने सेंटेंस खुद भी फ्रेम कर सकते हैं. सपोज माई कैट, ये सब्जेक्ट दिया है. अब इसका प्रेडिकेट मैंने बना दिया इज़ वेरी क्यूट. आप कुछ और बना सकते हैं. माई पेट कैट इज़ ब्लैक इन कलर, है ना. एनीथिंग यू कैन फ्रेम. सो हियर 10 sentences are there. 5 I am speaking. 5 you can do through pics. Second, the famous singer comes at my home. आप अपना कुछ और बना सकते हैं. The famous singer I like is anybody's name. Third, the dash, अब इसमें आपको सब्जेक्ट नहीं दिया है, प्रेडिकेट दिया है. was driving too rashly. तो मैंने लिखा the driver of my car. ठीक है. फोर्थ, फिर इसमें सब्जेक्ट नहीं है, प्रेडिकेटिव वेयर पुट बिहाइंड बार्स. द थीव्स वेयर पुट बिहाइंड द बार्स. आप अपने कुछ फैमिली के दे सकते हैं. माई नेबर्स फैमिली वेयर पुट बिहाइंड द बार्स. बार्स मीन्स यहाँ पर जेल. ठीक है. शेक्सपियर मैंने लिखा है वॉज अ फेमस प्ले राइटर. आप लिख सकते हैं शेक्सपियर हैज़ रिटन सो मेनी नॉवेल्स. तो यू कैन फ्रेम अकॉर्डिंग टू योर चॉइस ऑल्सो. So 5 I told you, 6, 7, 8, 9, 10 you can do through pics. Now another topic is affirmative and negative sentence. Simple, I am going, affirmative, no, है ना. Now इसका negative क्या है? I am not going. So that is called negative. So affirmative से negative में sentence बनाना, negative से affirmative बनाना. These exercises we will do in this next page. ठीक है. Affirmative simple and negative means, negative का मतलब ही you have to add no in that sentence. Suppose Sahil will go to the market today. तो Sahil will not go. ठीक है. You have to insert not but at the proper place. Suman completed her work fast. अब आप उसको नेगेटिव में करो. Suman did not complete. Did के साथ completed नहीं आएगा. डिड के साथ ऑलवेज प्रेजेंट टेंस लगता है. सो जब आप डिड में करेंगे तो उसमें प्रेजेंट टेंस लगाएंगे. सुमन डिड नॉट कंप्लीट हर वर्क. ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर ई, अगेन 5 सेंटेंस है. 2 सेंटेंस आई एम रीडिंग. 3, 4, 5 यू कैन डू थ्रू पिक्स. महेश इज एंग्री विथ मंजू. सो महेश इज नॉट एंग्री विथ मंजू. आई केम इन थ्रू द विंडो. So I in this sentence I add didn't. I didn't, तो did के साथ came नहीं आएगा, did के साथ come. I didn't come in through the window. Kanika works for a local newspaper. Kanika hasn't worked for a local newspaper. ठीक है. Adi will be back tomorrow.
Adil will not be back tomorrow, है ना. Okay. Now in question number 8, rewrite the following sentences in their affirmative form. I told you we can give you in both ways. So affirmative sentences are given, negatives are given. Now you have to change into affirmative. The workman did not cover up the manhole. अब आपको not हटाना है. The workman covered up the manhole. It won't rain today. आज बारिश नहीं होगी. नहीं लगा है. अब आपको इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है. There will be no rain. There will be rain today. No को आपको हटाना है. There will be rain today. नेगेटिव सेंटेंस को आपको पॉजिटिव में करना है. शी डजेंट ईट मीट, तो शी ईट्स मीट, है ना. वो नहीं खाती है, तो उसका सिंपल क्या हो गया, वो खाती है. आपको उसका अपोजिट करना है. हाँ वाले को ना करना और ना वाले को हाँ करना. सो एफर्मेटिव मीन्स हाँ वाले सेंटेंस, और उसका नेगेटिव आपको करना है नहीं में. ठीक है. मैं जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ वाला. ठीक है. 4 and 5 you do through pics. Again, declarative and interrogative sentences. Declarative, I already told you, simple sentences. And interrogative means क्वेश्चन बनाना. अभी आपने एफर्मेटिव से नेगेटिव बनाया, अब आपको सिंपल से क्वेश्चन में बदलना है. ये तो बहुत इजी है. देखो, यू कैन हेल्प मी फिक्स दिस टेप. आपको कैन को आगे शिफ्ट करना होता है. कैन यू हेल्प मी फिक्स द टेप, और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए. जो भी हो, इज वॉज जो भी हो, उसको आपको फ्रंट में कर देना है, तो वो क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है. सी, द ड्राइवर इज पार्किंग द कार. इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. नाउ इज द ड्राइवर पार्किंग द कार, क्वेश्चन हो गया, और इनपुट क्वेश्चन मार्क. द पप्पी विल च्यू ऑन द शू, तो विल, जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे लगा दीजिए. विल द पप्पी. इज मीरा. Bono is your pet dog. Is Bono your pet dog? The food was tasty. Was the food was tasty? So आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा के उसको क्वेश्चन मार्क में फ्रेम करना है, क्वेश्चन सेंटेंस में. बट डोंट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क, अदरवाइज फिर वो क्वेश्चन नहीं रहेगा. एंड अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ पंक्चुएशन ऑल्सो इट विल गो रॉन्ग. ठीक है. एक और, दे आर लुकिंग एट द बटरफ्लाइज. अब आप इसको इंट्रोगेटिव करो. आर दे लुकिंग एट द बटरफ्लाइज, एंड पुट क्वेश्चन मार्क. ओके. नाउ लास्ट क्वेश्चन इज चेंज द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनटू स्टेटमेंट्स. अगेन आप क्वेश्चन दिया है, उसको आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है. सर इट इज कॉल्ड वाइस वर्सा. हम आपको ये देंगे तो आपको इस टाइप से करना है, ये देंगे तो आपको इस टाइप से करना है. ओके. सो बोथ वे यू हैव टू डू द कन्वर्शन ऑफ द सेंटेंसेस, so that you can practice and you should know what types of sentences are in English grammar. So first, will you go to the market today? This is a question. Now आप इसको ठीक करो. वही सेम थिंग, आपने पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा के क्वेश्चन बनाया था, अब हेल्पिंग वर्ब को पीछे लगा दीजिए. You will go to the market today. Has Sam written the letter to his sister? Sam has written the letter to his sister. Simple हो गया. Is somebody jumping on the roof? Somebody is jumping on the roof. Okay. It is vice versa. आप आगे पीछे करके उसको फ्रेमिंग कर सकते हैं. Should he call before coming? He should call before coming. In this way, both you have to convert the sentences. I hope you will watch the video very carefully and understand the types of sentences also. Go through the book exercises very carefully, and we will do some practice sheets on this chapter also, so your concept will be cleared thoroughly. So till then, have a nice day, good day, enjoy your pathetic situation. Yeah? This situation is very pathetic. You are not going to school, but we should enjoy every moment of life. Okay. We are not able to reach you, but we are near to you through these videos. Okay. So till then, have a nice day. Goodbye. I was speaking about exclamatory sentences.
Exclamation mark means when you are speaking about a sentences of a sudden expression of sadness or happiness. Oh, we have won the match. Oh, what happened? So this type of expressions we can give exclamation mark. Okay. So अब now compare. First sentence, I like to read books. Simple. You can put full stop. Where are you going? Question mark. What a beautiful dress. So exclamation you can use. So these three signs you are clear. Now we use a comma to separate words or phrases in a sentence after introductory words such as yes, no, well, oh, etc. to separate the name of speaking and listener. Rohit, when we are saying about too many things, so we can separate them with commas. The apple, the bananas, the oranges and watermelon are fruits. So by commas we separate so many things. And yes, put a comma. I will come on Sunday. Sonia, comma, please sit down. So we are separating the sentences through commas. Now apostrophe you know, जैसे हम बोलते हैं ये मेरा है, तो हिंदी में उसके लिए हम apostrophe s कॉमा लगा के ऊपर s लगाते हैं. मीन्स रोहित का, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे रोहित्स. रोहित ऊपर कॉमा s, रोहित्स. So this is called apostrophe. So signs are clear to you. Now we can solve some book exercises that will help you in clearing your concept. Add commas at appropriate places in the following sentences and rewrite them. So, yes, my name is Arjun Nadar. So, yes के बाद put a comma, rest is same. Sachin Tendulkar, Roger Federer, Michael and Michael Phelps are great sportsmen. So, I earlier told you, when so many names are given, you can put commas and separate them. Okay? So, put commas and rewrite. Will, I stay back for another day. So, put a comma after will. So, it will separate the two sentences. Somesh, can you wait for 5 minutes? So, after Somesh, put commas so that the sentence will be clear to you. Antara, Sophia, Leena, Zeba and Tanu are my friends. So, Zeba and Tanu के last name और इसमें हमने एंड लगा दिया. बाकी सब नेम में आप यू कैन पुट कॉमास. अंतरा कॉमा, सोफिया कॉमा, लीना कॉमा एंड जेबा एंड तना, दो लास्ट की 2 नेम्स में हम एंड लगा देते हैं. ठीक है, रेस्ट में हम कॉमास लगा देते हैं. इंसर्ट पंक्चुएशन मार्क्स एट अप्रोप्रिएट प्लेसेस इन द फॉलोइंग सेंटेंस. नॉट सेंटेंसेस इज गिवन, सो आपको अपने अकॉर्डिंग उसमें देखना है कि कहाँ पर कॉमा आएगा, कहाँ पर फुल स्टॉप. So first is Sheila is young, energetic. So young and energetic 2 qualities है. तो young के बाद आप कॉमा लगाइए. Young, energetic and intelligent. Okay. How beautiful the bride is. Now it is the expression of happiness. So exclamation part sign is come. Would you, तो यहाँ पे कॉमा और would बोल के आप you are separating the sentences. They will, already you know they will का short form होता है, तो you put commas to separate they and double L. So they will invite Pooja, comma, Rohan and Vishal. 2-3 names होंगे, you can put commas. But last के 2 names में end आएगा, no comma. Okay. अब देखो apostrophe, Rajiv's brother. तो आपको राजीव्स एस के बीच में कॉमा लगाना पड़ेगा. राजीव का ब्रदर. ठीक है. फुल स्टॉप. एवरी सेंटेंस शुड बी एंड विथ फुल स्टॉप. एक्सक्लेमेशन का होगा तो एक्सक्लेमेशन पॉइंट साइन, और क्वेश्चन का होगा तो क्वेश्चन मार्क. 3 साइन यू हैव टू यूज इन द एंड ऑफ द सेंटेंस. नाउ कोटेशन मार्क. व्हेन द रूबी इज स्पीकिंग टू समवन, और क्या मैंने बोला एक्चुअल वर्ड्स, दैट विल कम इन कोटेशन मार्क्स. कोटेशन मार्क्स मीन्स 2 commas on the top of the sentence.
सी द टीचर सेड, अब टीचर ने क्या कहा वो आपको कॉमा लगा के बताना है, ठीक है। द टीचर सेड कॉमा, और फिर पूरा सेंटेंस में आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। सो व्हेन वी से द स्पोकन वर्ड्स, एक्चुअल स्पोकन वर्ड्स of a person, we use quotation. The first letter within quote should be a capital letter. Usually a comma separates the spoken words with the quotes and the rest of the sentences. You can understand when you see the pics and when you read the sentences from your book. Nikhil said, who took my eraser? So this is Nikhil ने क्या कहा है, actual words. कॉमा लगा के आप इसको शो कीजिए एंड दिस इज अ सेंटेंस ऑफ क्वेश्चन, सो पुट क्वेश्चन मार्क इन द एंड। हम किसी टाइटल के स्टोरीज का नेम, ये सब भी हम इन्वर्टेड कॉमास में शो करते हैं, ठीक है। नाउ सी क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दिस एक्सरसाइजेस, यू हैव टू पुट कॉमास एंड कोटेशन मार्क टू द फॉलोइंग सेंटेंसेस दैट यू विल नॉट अंडरस्टैंड थ्रू वीडियो, कि वेयर आई पुट द कॉमास, दैट विल बी क्लियर टू यू through pics. So you see the pics and read the sentences and do the exercises. Now punctuate and rewrite the following sentences using capital letters everywhere. See, in the end you are putting marks, but in the starting the first word should be, alphabet should be capital. Never start a sentence with small alphabet. See, this is a very long sentence. Oh, how boring a day it is. Hope I will get something interesting to read in this, thought Sunny as he picked up a magazine. See, I read this sentence. It was without commas, without sign, without capital letters. So it was looking very boring sentence. Now, after punctuation, there is a break and expressions also. Oh, so put a exclamation. Oh, how boring a day it is! Exclamation. I will get something interesting to read in this, comma, thought Sunny as he picked up a magazine. So sentence is broken into parts and it is explained through expressions also. He read R.K. Narayan's short story, और उसमें स्टोरी का नाम inverted commas में. So in this way you will come to know through the pics. Later he called up Neha and asked, what he asked to Neha, so put commas. May I please borrow your copy of the novel Swami and Friend. Novel का name है Swami and Friend, तो inverted commas, written by R.K. Narayan. So R.K. Narayan भी author का name है, तो it should be in capital. Starting should be capital. Full of, and this is a question कि may I, so it is a question mark sentence. Now Neha replied. In the fourth sentence, Neha replied. So what is the actual word of Neha? That will come in inverted commas. Neha replied, inverted comma, yes Sunny, you can take it, comma, उसमें sentence को break कर दो, whenever you want. Now this is simple sentence, nothing starting in full stop. Sunny borrowed the novel from Neha. All the proper nouns should be in capital. चाहे वो between में भी आए, sentence के between में नेहा आ रहा है तो भी and should be capital. ठीक है, proper noun should be in capital alphabet. He enjoyed reading it and returned it to her. फिर नेहा asked him. अब नेहा ने से फिर से बात की है, तो that is in actual words. Did you like the novel? Again it is a question, inverted commas and question mark. Sunny said, I loved it. Okay, so when you show the actual words spoken by somebody, it will come in inverted commas. So punctuation you can see on and clear by your pictures and when you write the sentences on your own. So I hope after watching the video you can be able to solve the book exercises. I am sending pics to you and clear your doubts, and good day. Have a nice day. Bye.